एसीसीए करना चाहता है तो वो मैट्रिक के बाद, ओ लेवल्स के बाद, इंटरमीडिएट के बाद, ए लेवल्स के बाद अपना एसीसीए स्टार्ट कर सकता है। इस एसीसीए के अंदर जो है इस वक्त इन टोटल 13 पेपर्स होते हैं जो कि एक बच्चे को पास करने होते हैं। इस 13 पेपर पास करने के साथ साथ जो है एडिशनली 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। तो इन टोटल 5 साढ़े 5 साल का अरसा लगता है और 5 साढ़े 5 साल के टाइम के अंदर एक बच्चा एसीसीए कंप्लीट कर लेता है। चार्ट अकाउंटेंसी प्रोफेशन में आपके पास 2 तरह की चार्ट अकाउंटेंसी है जो आप पाकिस्तान में बैठ के कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज द आईकैप विच इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा एसीसीए है जो कि यूके बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। मैं यहाँ पे आपको एसीसीए की कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो देखें, पहली बात तो ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज अ प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन जो है वो वन ऑफ द सुप्रीम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस क्वालिफिकेशन है। एक बच्चा अगर मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहता है तो सब कुछ मिल मिला के गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स पूरे पाकिस्तान में 15,000 सीट्स हैं, और होता यही है कि मेजॉरिटी बच्चे जो है दे डोंट एंड अप वेयर दे एक्चुअली वांटेड टू, कि उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, या मिलता है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है जिसकी फीस उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखें, एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन है विच इज़ द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। एज अ पेरेंट बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपके बच्चे ने इंटरमीडिएट या ए लेवल्स कंप्लीट कर लिया, अब व्हाट नेक्स्ट? क्या वो मेडिकल में जाएगा, क्या वो इंजीनियरिंग में जाएगा, क्या वो फाइनेंस की फील्ड में जाएगा, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर बैचलर्स करने के लिए जाएगा, वो किस फील्ड में जाएगा? मेरा नाम लुकमान रफ़ीक है एंड आई एम द प्रिंसिपल ऑफ स्क्राइबर अकेडमी। मैं आज आपके
Proudly sponsored by Motiwala Mobile Point. Okay. Hello. Hello. Okay. So, Bismillah Rahman Rahim. रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दिस इज़ फयाज़ फैसल और आप देख रहे हैं MPL जमात बेस लीग का एक और मैच जो कि खेला जा रहा है हलारी हॉक्स और ओखाई स्ट्राइकर्स के दरमियान। Although it was a pretty awaited match here because दोनों ही बड़ी टीम्स हैं। ओखाई स्ट्राइकर्स जिन्होंने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। बल्लेबाजी करने का फैसला किया इनफैक्ट मेरे पास इस वक्त नेम है समीर और शाकिर इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं ओखाई स्ट्राइकर्स की, जहां मोहसिन हनीफ गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑल्दो एक बड़ा अच्छा नाम, बड़े एक्सपीरियंस बॉलर और वो जानते हैं इम्पोर्टेंस कि उन्होंने अर्ली ऑन किस तरीके से बॉल करना है, क्योंकि एक आर्ट होता है नई बॉल के साथ बॉल करना भी और इसके ऊपर कंट्रोल रखना। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अर्ली ऑन ओवर्स में बॉल के ऊपर कंट्रोल रखा जाए एंड दिस इज़ व्हाट यू आर सीइंग राइट नाउ। 3 गेंदें अब तक डिलीवर हुई हैं, सिर्फ 6 रन बनाने में कामयाब हुई है ओखाई स्ट्राइकर्स। इस बार थोड़ी बाहर की जानिब थी ये गेंद, बिल्कुल बल्ले से कनेक्शन प्रॉपर निकला, यहां जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन मिलेंगे। शाकिर इज ऑन स्ट्राइक और वो जानते हैं ये इंपॉर्टेंस कि अर्ली ऑन कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करना होगा, क्योंकि सर्कल में जितने रन मिलेंगे वो ज्यादा काउंटेबल होंगे इस वक्त ओखाई स्ट्राइकर्स के लिए। ऑल्दो अर्ली ऑन स्टार्ट अच्छा मिले तो मैच काफी हद तक अच्छा बिल्टअप हो जाता है। ओखाई स्ट्राइकर्स नाउ ऑन 10 विदाउट एनी लॉस। 4 डिलीवरी डिलीवर हो चुकी हैं, पहले ओवर का खेल जारी है। इस बार फिर इसे टारगेट किया टुवर्ड्स द कवर्स और काफी तेज थ्रो जरूर किया था, लेकिन इतना आसान नहीं था। चांस जरूर था लेकिन एक ही रन मिलेगा। और अब आखिरी गेंद इस ओवर का इख्तिताम करने के लिए। इस बार फिर सिमिलर एरिया की तरफ हिट जरूर किया था, लेकिन फील्डर थे मौजूद, कोई रन हासिल ना होगा। इसी के साथ डॉट और पहले ओवर का हुआ इख्तिताम 11 रन बगैर किसी नुकसान के। चार्ट अकाउंटेंसी प्रोफेशन में अगर एक बच्चा ACCA करना चाहता है तो वो मैट्रिक के बाद, O लेवल्स के बाद, इंटरमीडिएट के बाद, A लेवल्स के बाद अपना ACCA स्टार्ट कर सकता है। इस ACCA के अंदर जो है इस वक्त इन टोटल 13 पेपर्स होते हैं जो कि एक बच्चे को पास करने होते हैं। इस 13 पेपर पास करने के साथ साथ जो है
एडिशनली 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। तो इन टोटल 5-5.5 साल का अरसा लगता है और 5-5.5 साल के टाइम के अंदर एक बच्चा ACCA कंप्लीट कर लेता है। चार्ट अकाउंटेंसी प्रोफेशन में आपके पास 2 तरह की चार्ट अकाउंटेंसी है जो आप पाकिस्तान में बैठ के कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज द ICAF विच इज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा ACCA है। We go once again. इस बार flighted up in the air, wasn't connected perfectly, लेकिन although वो बड़ा तेज खेलना चाहते थे यहाँ। इस बार से पॉइंट की जानिब हिट जरूर किया, फील्डर थे मौजूद, बड़ा उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा यहाँ। सिंगल के साथ शाकिर ने एक बार फिर स्ट्राइक को रोटेट किया, समीर को बल्लेबाजी करने का मौका दिया। यहाँ 2 गेंदें खेल चुके हैं, 1 रन बनाने में कामयाब हुए हैं समीर, जहां स्कोर पहुंचा 12 बगैर किसी नुकसान के। 1.2 ओवर का हुआ खेल मुकम्मल। और देखना होगा अंपायर का इशारा, इस बार दौड़े जरूर हैं फील्डर दोनों, और यहां बल्लेबाजों को भी रन जरूर मिलेंगे। वाइट बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। नो बॉल पे दौड़ के 2 रन हासिल किए यहां। इस बार फिर स्ट्राइक किया है डाउन द ग्राउंड, सिंगल मिलेगा। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 बगैर किसी नुकसान के। बड़ा स्लो रिदम के अंदर इस वक्त गेम जारी है, इंस्टेड के वो बड़े हिट्स लगाए फ्रॉम द बिगिनिंग। बड़ा कंपोज अंदाज। इस बार फिर आसान नहीं थी ये गेंद, पड़ के अंदर की तरफ निकली, उसे बड़े उम्दा तरीके से खेला, 1 ही रन हासिल किया। और तो ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी कि आप स्कोर कार्ड को रनिंग में रखें, सिंगल्स एंड डबल्स ऑल्दो हाथ में होने चाहिए इंस्टेड ऑफ डूइंग डॉट्स हियर। और इस बार स्ट्राइक किया, इसे प्रॉपर अंदाज में पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर। बड़ा हिट है ये 6 रन के साथ। Squellig was the target and boomed. बहुत ही उम्दा। तो when he'll get the ball in the range, strike भी यहां पर जरूर मिलेगा। और समीर is now getting confidence. although 4 गेंदें खेली हैं, 8 रन्स बनाए हैं इन्होंने। He was trying to muscle it up once again, but nicely driven there. He's running for the second one as well. Nicely. Oh my. A couple of runs there. Good running between the wickets. This ends the over. 2 overs past 25 without any loss. जो कि यूके बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। मैं यहाँ पे आपको ACCA की कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा। तो देखें, पहली बात तो ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज अ प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन जो है वो वन ऑफ द सुप्रीम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस क्वालिफिकेशन है। एक बच्चा अगर मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहता है तो सब कुछ मिल मिला के गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स पूरे पाकिस्तान में 15,000 सीट्स हैं, और होता यही है कि मेजॉरिटी बच्चे जो है दे डोंट एंड अप वेयर दे एक्चुअली वांटेड टू, कि उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, या मिलता है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है जिसकी फीस उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखें, एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन है विच इज़ द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। एज अ पेरेंट बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपके बच्चे ने इंटरमीडिएट या A लेवल्स कंप्लीट कर लिया, अब व्हाट नेक्स्ट? क्या वो मेडिकल में जाएगा, क्या वो इंजीनियरिंग में जाएगा, क्या वो फाइनेंस की फील्ड में जाएगा, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर बैचलर्स करने के लिए जाएगा, वो किस फील्ड में जाएगा? मेरा नाम लुकमान रफीक है एंड आई एम द प्रिंसिपल ऑफ स्क्राइबर अकेडमी। मैं आज आपके
अब्दुल समद मुतलानी को लाया गया गेंदबाजी के लिए, जहां शाकिर फेस करेंगे। 7 गेंदें खेल चुके हैं, 12 रन्स बनाए अब तक शाकिर ने। तीसरा ओवर स्टार्ट हुआ है। Although Samad is a quick bowler, young age, but too much of potential. Away from the batter, गेंद जरूर की है, चांस है यहाँ, डायरेक्ट हिट होता तो कुछ फायदा बन सकता था। Once again यहाँ चांस है, and the finger is raised, gone, gone. This was very risky, very risky. और ये रिस्क लेना थोड़ा सा भारी पड़ा, विकेट गवाई। फर्स्ट ब्लड या फर्स्ट विकेट डाउन फॉर ओखाई स्ट्राइकर्स। There we go, सुभान नए आने वाले बल्लेबाज। although that was just an edge, जो कि थर्ड मैन की जानिब गेंद गई, लेकिन समद मुतलानी की बॉलिंग में काफ़ी हद तक वेरिएशंस हैं, काफ़ी बाहर की तरफ ये बॉल पड़ के निकली, जो कि एक बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पर। बड़े अच्छे अंदाज के अंदर खेले, ऑल्दो आसान नहीं है फेस ऑफ द बैट को ओपन करना, इतना तेज गेंदबाज, ऊपर से इसके पास स्विंग भी है। He's doing some good deliveries, Abdul Samad Mutlani. Once again बाहर की जानिब straight away, और although he was trying to muscle it up, लेकिन फीडर थे मौजूद, intelligent fielding being placed here, he knows where the gap is, और उसी gap के दरमियान गेंदबाजी करना बड़ा important. No, it's a no ball. That's a no. Free it. No fear of getting out. This is an opportunity for Shakir, and although he has the potential कि वो इस फ्री हिट को अच्छे से पिकअप कर सकते हैं। Oh, smacks it into the gap. That's Subhan Faisal, in fact. Picked up the free hit perfectly. 4 more. This was much required. बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं सुभान, और तो बाहर की तरफ गेंद मिली इन्हें, और इसे ऑफसाइड की जानिब बड़े उम्दा अंदाज में हिट किया, बाउंड्री लाइन तक पहुंचाया। 4 more. स्कोर पहुंचा 32, 1 विकेट के नुकसान पे 2.3 ओवर्स का हुआ खेल मुकम्मल।
इस बार अवे फ्रॉम द बैटर थोड़ी सी ज्यादा लेग साइड पे हो गई गेंद, जिसका नतीजा वाइड बॉल। अंपायर का इशारा एक मजीद होगा। टोटल में ऐड स्कोर पहुंचा 33, एक विकेट के नुकसान पे। ऑल्दो एक अच्छे स्कोर को अब तक बिल्टअप करने में कामयाब हुई है ओखाई स्ट्राइकर्स। और अब्दुल समद मोटलानी, ही इज स्ट्रगलिंग अ बिट ऑल्दो ही इज अ गुड बॉलर। 3 गेंदे करवा चुके हैं लेकिन 8 रन्स कंसीड कर लिए अब तक। इस बार बॉल फिर पड़ के बाहर की जानिब निकली, लेकिन ब्लॉक किया इसे बड़े अच्छे अंदाज में। ऑल्दो दे नो कि जहां आपको एक प्रॉपर डिलीवरी मिलेगी, जहां हिट कर सकेंगे, वहीं पर ही चांस लेंगे। ऑल्दो कीपिंग द विकेट्स इन हैंड is really important. Just look at that, look at the swing there. Instead of hitting the foolish shots, they're going with very sensible play. Oh well, he was trying to go towards the onside, appealed as well, but no response by the umpire there. That's been signaled as a leg by. One more added to the total. So now last delivery to go, which will end the over. Here we go. Set down the ground, खेला towards the extra covers. लेकिन फील्डर थे मौजूद. Although why are they throwing it very hard? They have to keep the ball in hand. Okay, so that was a dot in this manner. It's the end of the third. 34 for the loss of 1 wicket. से यहां थोड़ा सा तेज दौड़ना होगा. जी हाँ बिल्कुल, कंफर्टेबली इन, काफी तेज दौड़े और इसी तरीके से रन्स को थोड़ा तेज दौड़ना होगा, विच शोज द फिटनेस है. लेकिन रिस्की रन्स लेना इस वक्त काफी प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है, क्योंकि अर्ली ऑन इन द पावर प्ले यू हैव टू कीप द विकेट्स इन हैंड. So now Shakir, he's gonna face it. Raf is brought to ball here. थोड़ा सा बाहर की जानिब गेंद की और से कवर्स की जानिब निकालने में हुए कामयाब. Shakir is very much potential with the bat. Just look at that. How nicely he has played that. Came into the level and got the room there as well. और इसका फायदा उठाया शाकिर ने. स्कोर पहुंचा 39, 1 विकेट के नुकसान पे. 3.2 ओवर्स का हुआ खेल मुकम्मल. करंट रन रेट 11.70. और इस बार आसान नहीं थी ये गेंद. बड़ी जबरदस्त डिलीवरी इस बार टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द स्टंप की ये गेंद. पजलब किया शाकिर को.
और उठा के खेला इस बार, ये जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर. That's the gigantic 6 it is. Amazing. वो जो डॉट बॉल थी वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप कर गई और थोड़ी सी बाहर की है गेंद, तो उसे उठा के लगाया बाउंड्री लाइन के बाहर. That was a magnificent hit for a 6. Here Shakir is putting on some energy in the ground. That's huge. Huge. 6 it is. Excellent striking. 2 in a row. क्या ही बात है. हल्की सी लाइन पिक करना और प्रॉपरली टाइम करना. Flow of runs. That's immense batting here. Score races up to 51 for the loss of 1 wicket. 3.5 overs already delivered. One more to go. इस बार लेट कट towards the third man. जी हाँ बिल्कुल, जहां गैप फाइंड आउट करेंगे वहां पर हिट लगाएंगे. That was amazing. Shows the potential here. Excellent. 2 maximums and 2 boundaries in this over. And 21 रन का थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहा ये ओवर. 4 ओवर्स का हुआ खेल मुकम्मल. 55 1 विकेट के नुकसान पे. Here we go. इस बार फिर बाहर की गेंद और इस बार थे फील्डर मौजूद लेकिन बड़े उम्दा अंदाज में निकाले थे जरूर. दौड़ के 2 रन मुकम्मल किए. और that shows the fitness as well. They're going for some maximum runs in the delivery they could find. That's amazing. Score races up to 61. Power play को properly utilize कर रहे हैं इस वक्त. और इस बार चांस था यहां. Nicely fielded in the end. Although strategized किया हुआ है, fielder properly placed किया हुआ है. Very intelligent field being placed here. That was a proper trap for Subhan. Oh, as you can see in the replay as well, it was a good trap there. Score now races up to 62 for the loss of 1 wicket after 4.3. और उठा के खेला हवा में. चांस एंड oh, that was a blunder. Shakir got a life here. Although that was very unlucky, but very fortunate for Shakir this time. This catch must have been taken, but no. That's a little loss here for Halari Hawks. $63 for 1. और इस बार थोड़ी सी की थी बाहर, कनेक्ट ना हुई, लेकिन they'll run for a buy here. So runs ड्रॉप नहीं करेंगे, रन्स लेते रहेंगे. बिल्कुल स्कोर कार्ड इन रनिंग रखना है. पावर प्ले को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें इस वक्त. ओखाई स्ट्राइकर्स 63 रन्स के ऊपर अपना स्कोर पहुंचा चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पे. 4.4 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है. मजीद 2 गेंदें करवानी है इस ओवर का इख्तिताम करने के लिए. Oh, good one there. Very good one there. He tried the Okhai. Excellent one.
Abdul Samad is now doing some good ones here. पांच ओवर्स का वक्त खेल मुकम्मल 64 एक विकेट के नुकसान पे. Oh, that was driven very nicely there and well fielded in the end. सामने की जानिब खेले थे मोहसिन हनीफ, गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त. The very good bowler, too much of potential, very energetic one as well. Okhai Strikers का स्कोर 65 एक विकेट के नुकसान पे 5.1 ओवर का वह खेल मुकम्मल. After this over, it will be the end of the power play. Here we go, a quicker one. Straight to the fielder, and that's going to be a dot. Clever bowling, very clever. Although now they're playing the mind games. Score races up to 65 for the loss of 1 wicket. 5.2 overs already delivered. Oh, nice delivery once again. He's going for similar ones. Oh, good delivery once again. Well, Mohsin Hanif is trying Yorkers in every single delivery. And he knows that he has the weapon where he won't be hit for some maximums, because already the power play is properly utilized. 66 for the loss of 1 wicket. इस बार थोड़ा बाहर की जानिब की थी गेंद, into the gap, nicely played here by Soban. Yeah, it goes for a boundary, 4 more. A partnership of 41 runs in 22 deliveries. Just look at that, बाहर की तरफ गेंद की और उम्दा अंदाज में निकालने में हुए कामयाब. स्कोर पहुंचा 70 एक विकेट के नुकसान पे. Once again, delivered a little inside, although it was a chance of a direct hit, but he's taking a run there. End of the 6th over, 71 for the loss of 1 wicket. Power play is over now.
There we go, Bilal. He's bowling it. 7वें ओवर का आगाज. शाकिर is gonna face 35 रन्स बना चुके हैं 20 गेंदों पे. इस बार towards the off stump की थी ये गेंद. Tried to sweep it away. Although wasn't connected perfectly, but still got a single here. Score now races up to 73 for the loss of 1 wicket. 6.2 overs already delivered. A partnership of 48 in 26 deliveries. Once again, delivered it really near the off with just a single there. .3 overs already delivered, 74 for the loss of 1 wicket. Smart pair that was a little googly. Didn't got any run there. Although this overtime line with a single and a dot. Smacks it there. And that's gonna go all the way. 6. Where you have Shakir sitting standing there, you know that he's gonna hit it perfectly. Very good with the bat, very stronger. Here we go, smacks it down the ground once again. And that goes out of the park once again. That's going to go for a boundary. 4 more. So in this manner, it's the end of the 7th over 84 for the loss of 1 wicket. The game. Proudly sponsored by Motiwala Mobile Point.
चार्ट अकाउंटेंसी प्रोफेशन में अगर एक बच्चा ACCA करना चाहता है तो वो मैट्रिक के बाद, O लेवल्स के बाद, इंटरमीडिएट के बाद, A लेवल्स के बाद अपना ACCA स्टार्ट कर सकता है। इस ACCA के अंदर जो है इस वक्त इन टोटल 13 पेपर्स होते हैं जो कि एक बच्चे को पास करने होते हैं। इस 13 पेपर पास करने के साथ साथ जो है Just blocks it there, plays it just for a single. Quick. Taking a little risky one as well, but very quick here. Shakir is going to face as well 52 in 27 deliveries. Very strong with the bat. और इस बार चांस है यहां, and that was the easiest one, gone, taken. The big wicket is down. Shakir departs. एडिशनली 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, तो इन टोटल 5 साढ़े 5 साल का अरसा लगता है और 5 साढ़े 5 साल के टाइम के अंदर एक बच्चा ACCA कंप्लीट कर लेता है। चार्ट अकाउंटेंसी प्रोफेशन में आपके पास 2 तरह की चार्ट अकाउंटेंसी है जो आप पाकिस्तान में बैठ के कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज द ICAF व्हिच इज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा ACCA है जो कि UK बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। मैं यहाँ पे आपको ACCA की कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो देखें, पहली बात तो ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज अ प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन जो है वो वन ऑफ द सुप्रीम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस क्वालिफिकेशन है। एक बच्चा अगर मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहता है तो सब कुछ मिल मिला के गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स पूरे पाकिस्तान में 15,000 सीट्स हैं, और होता यही है कि मेजॉरिटी बच्चे जो है दे डोंट एंड अप वेयर दे एक्चुअली वांटेड टू, कि उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, या मिलता है अमार पास्ता नए आने वाले बल्लेबाज। और 2 विकेट्स डाउन हुई हैं ओखाई स्ट्राइकर्स की 8.2 ओवर्स में। अब तक बड़ा अच्छा स्कोर बिल्डअप करने में कामयाब हुई है ओखाई। वेरी गुड डिलीवरी एंड अ नाइस ब्लॉक एज वेल। ऑल्दो क्रीज पे कदम जमाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड Amar Pasta knows it because he's very much experienced. Amar, magnificent play here by Okhai strikers. Very nicely played. Although अगर यहाँ रन दौड़ते तो that would be a little risky, but very intelligent and presence of mind जहाँ important थी वहाँ शो की। Amar and Subhan. Although Subhan is a little set on the crease, on the other end Amar is the new one. Just placed it for a single. ज़्यादा मतलब नहीं किया, अपने अकाउंट को ओपन किया with a single. Now Subhan is going to get the strike here. Last delivery to go. That will end the 9th. Played it straight to the bowler, nicely fielded there in the end, and this ends the 9th over, 94 for the loss of 2 wickets. तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है जिसकी फीस उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखें, एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन है विच इज द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। एज अ पेरेंट बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपके बच्चे ने इंटरमीडिएट या A लेवल्स कंप्लीट कर लिया, अब व्हाट नेक्स्ट? क्या वो मेडिकल में जाएगा, क्या वो इंजीनियरिंग में जाएगा, क्या वो फाइनेंस की फील्ड में जाएगा, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर बैचलर्स करने के लिए जाएगा, वो किस फील्ड में जाएगा? मेरा नाम लुकमान रफीक है एंड आई एम द प्रिंसिपल ऑफ स्क्राइबर अकेडमी। मैं आज आपके
Abdul Aziz brought back to bowl, yeah. और डाउन द ग्राउंड इस बार थोड़ी सी लोअर डिलीवरी. ऑल्दो अमर हैड द पोटेंशियल कि वो इससे सामने की जानिब थोड़ा सा मसल कर सकते थे. ऑल्दो ही इज फर्स्ट पुटिंग ऑन हिज लेग्स ऑन द क्रीज. ही नोज कि उन्होंने वहां पर पहले जमना है और फिर उसके बाद हिट्स लगानी है. He's gaining the confidence now. He's middling the deliveries. Exceptional play here. Already they have a good score in hand. 94 for the loss of 2 wickets in 9.3. Although the current run rate of 9.89. Oh, that would have been a blunder, yeah. That would have been a blunder, yeah. You don't have to play these kinds of shots here. If you're driving it, you have to drive it very carefully. That was the top edge. Must have been taken. Oh, well, he smacks that. He wasn't even looking at the ball. That goes out of the park. 6. That was the beautiful hit. Just look at that. Excellent. So 100 up for Okhai strikers, 100 for 2. He smacked it hard once again. Surpassed the fielder there. It was grabbed at the brink of the boundary. Well, he has taken a couple of runs there. And this ends the 10th over. Half of the innings is over now. 102. 102.
straight down the ground. Abdulaziz brought back to ball. Well, he tried his heart and soul, but didn't give it up on the delivery there. Just grabbed it in the end as well. That's going to be a dot. Score now raises up to 106 for the loss of 2 wickets. 11.1 overs already delivered here. That's a little flighted and a flick of the wrist. Taking just a single there. Well, they're not going to muscle it up too hard. They're just playing it very calmly, composedly, because they know they have the score in the hand, and they just have to just build it up and take it like it's going right now. They don't have to put on some extra effort, which will be a little harmful for them if they give some wickets. Nicely played there. Although the flow of boundaries have stopped a little, but still they have kept the scorecard running. Instead of doing some dots here, they are going for singles and doubles, rotation of strike, which is the beauty of T20 cricket. Current run rate now declined to 9.39. Oh, that was towards the off stump. Well, it wasn't easy for the batter to play it, but he just blocked it and took a single there. Good running between the wickets as well. Dot with 3 singles this over timeline. Still 2 more deliveries to go. Well, that was too flighted. Given a full toss, that was the juiciest one. Smacked it for a maximum. Although you are doing some slower deliveries, and when you'll give a full toss, that is just giving chances to the batter. He'll surely open his hand and he'll just bang you over for a maximum. 6. One more delivery to go. Yet he was trying to do the similar mistake, and he has got the result here. Similar kind of a mistake and a similar kind of a result that resulted into a boundary. So in this manner, it's the end of the over as well. 12 overs past 119 for the loss of 2 wickets.
Proudly sponsored by Motiwala Mobile Point. Oh, misfield there, which will give some runs here. Amar is now on 28 in 24 deliveries, 143 for the loss of 2 wickets, 14.1 delivered. Mohsin Hanif, he's delivering it. Current run rate 10.09. Oh, that wasn't connected well, although Amar was trying to lob that. And he had opened the face of the bat, but still wasn't able to connect that. 143 for 2. Here we go into the middle and just flicked it away. Flick of the wrist and that will go for a boundary. Excellent striking here by Amar Pasta. And he has the potential and he's very strong with the bat. He's eyeing the ball perfectly and just look at the results. Magnificent play. 147 for 2 after 14.3. Here we go once again. Smacked it down the ground. Nicely delivered. They're sprinting for another one. Oh! Great running between the wickets. They were very quick. Very, very quick. Very fit Amar Pasta. He's on 34 now in 27 deliveries. Oh, straight down the ground. Nailed it perfectly, although there was a field, a little bit of a misfield there, and it went for a boundary. 4 more. Just look at that in the replay as well. It was just little inches away from his hand, and here we go. Although he dived it slide, but it's of no use. Score now races up to 153 for the loss of 2 wickets for Okhai strikers. Slower one, a change of pace. Well, taking a single there. So this ends the 15th now. 154 for the loss of 2 wickets. Magnificent play. चार्ट अकाउंटेंसी प्रोफेशन में अगर एक बच्चा ACCA करना चाहता है तो वो मैट्रिक के बाद, O लेवल्स के बाद, इंटरमीडिएट के बाद, A लेवल्स के बाद अपना ACCA स्टार्ट कर सकता है।
इस ACCA के अंदर जो है इस वक्त इन टोटल 13 पेपर्स होते हैं जो कि एक बच्चे को पास करने होते हैं। इस 13 पेपर पास करने के साथ साथ जो है एडिशनली 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। तो इन टोटल 5 साढ़े 5 साल का अरसा लगता है और 5 साढ़े 5 साल के टाइम के अंदर एक बच्चा ACCA कंप्लीट कर लेता है। चार्ट अकाउंटेंसी प्रोफेशन में आपके पास 2 तरह की चार्ट अकाउंटेंसी है जो आप पाकिस्तान में बैठ के कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज द ICAF विच इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान और दूसरा ACCA है जो कि UK बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। मैं यहाँ पे आपको ACCA की कुछ Oh, that's race high. That's a maximum once again. Amar Pasta is only dealing in boundaries now. He's getting the ball in the range that is going outside the park. Smacks it once again. And that's clear defense. It's the half century for Amar Pasta. Half century. Excellent play. 31 deliveries, 51 there for Amar. Magnificent. Well, he has hit for 4 sixes and 3 fours in his innings. Excellent. Here we go. Slow one once again. Oh! Nicely fielded in the end. Here we go, little far away once again. That was the point. Surpass the fielder. That's going to go for a boundary. 4 more. That's the proper gameplay. The aggressive one here by Okhai strikers. Smash it once again. That's once again a huge one, gigantic. Little expensive over here so far for Abdulaziz. $22 so far of this over. Still a delivery left. Smash it down the ground here. Taking a single, so this ends the over. End of the 16th. 177 for the loss of 2 wickets. 23 runs of this over. चीज़ें डिस्कस करूंगा। तो देखें, पहली बात तो ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज अ प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन जो है वो वन ऑफ द सुप्रीम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस क्वालिफिकेशन है। एक बच्चा अगर मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहता है तो सब कुछ मिल मिला के गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स पूरे पाकिस्तान में 15,000 सीट्स हैं और होता यही है कि मेजॉरिटी बच्चे जो है दे डोंट एंड अप वेयर दे एक्चुअली वांटेड टू, कि उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता या मिलता है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है जिसकी फीस उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखें, एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन है विच इज़ द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। एज अ पेरेंट बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपके बच्चे ने इंटरमीडिएट या A लेवल्स कंप्लीट कर लिया, अब व्हाट नेक्स्ट? क्या वो मेडिकल में जाएगा, क्या वो इंजीनियरिंग में जाएगा, क्या वो फाइनेंस की फील्ड में जाएगा, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर बैचलर्स करने के लिए जाएगा, वो किस फील्ड में जाएगा? मेरा नाम लुकमान रफीक है एंड आई एम द प्रिंसिपल ऑफ स्क्राइबर अकेडमी। मैं आज आपके
and smacks it once again. Amar Pasta. He's amazing. That's a maximum. Every single bowler. He's not giving any chance. Maximums all the way. Oh. Just a single, yeah. Here we go. Oh, just look at that. Sailing over the fence. 6. He was not even looking at the ball. He was so confident that it will surely gonna go for a maximum. Here we go, smacks it hard. That's straight to the fielder. So this ends the overs. 17 overs passed, 193 for the loss of 2 wickets. Oh, that's race high once again. That's gonna clear the fence. That's maximum once again. It was Subhan Faisal this time. Well, now he has got the confidence as well. That's the half century for Subhan in 31 deliveries. Both the half centurions on the crease. Really nice there. Once again, hits it hard. It was a fielder belly. Stived it and grabbed it. So 200 up for Okhai strikers. 200 for 2. Oh, that goes once again. That clearance too. Maximum. Amar is on a great form today.
He's looking at the ball very clearly. Very clean hits by him as well. Such entertainment for the crowd. Yeah, he goes there again once. Oh, nicely fielded in the end. He was running and just very energetic, Amar. He's going for a lofted one on every single delivery. Not leaving any bowler. He isn't afraid of any as well. Just look at that. Just got a single there. Wasn't it too hard? That was really towards the cover region. .209 for 2. Last delivery to go. Down the ground. Just a single on the board. This ends the 18th year. 210 for the loss of 2 wickets.
Oh, well, Abdulaziz brought back to bowl. He's bowling the last over of his spell, and although it's the last over of the game as well, 44 runs he has conceded so far. Well, he was trying to lob that once again, wasn't connected well. Just got a single on the board. But now, Swan Faisal once again on strike, and he's much set on the crease, the left-hander. He can be really dangerous for Abdulaziz here. Oh, he took 2 steps ahead. Although he was outside the crease for a long time. Just look at that. Chance of a stump there. And Bilal Aslam was not happy with that. Oh, hits it hard. And that's going to clear the fence as well. That's a maximum. Big hits here on the go. Well, now they're eyeing the ball perfectly here. Striking it well as well. 2 more deliveries to go. Here we go with the second one in a row. 6. Extremely great play. He's showing that he's set on the crease and he can do wonders. He's on 75 and 40 now. Here we go once again. That's the 3rd one in the row. 3 deliveries. All 3 utilized perfectly here. 81 not out, and here the score ends on 243. It's 244 to win. That won't be very easy for Halari Hawks. 244 is the target. We'll be back with the second innings in a bit.
Proudly sponsored by Motiwala Mobile Point. चार्ट अकाउंटेंसी प्रोफेशन में अगर एक बच्चा एसीसीए करना चाहता है तो वो मैट्रिक के बाद, ओ लेवल्स के बाद, इंटरमीडिएट के बाद, ए लेवल्स के बाद अपना एसीसीए स्टार्ट कर सकता है। इस एसीसीए के अंदर जो है इस वक्त इन टोटल 13 पेपर्स होते हैं जो कि एक बच्चे को पास करने होते हैं। इस 13 पेपर पास करने के साथ साथ जो है एडिशनली 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। तो इन टोटल 5-5.5 साल का अरसा लगता है और 5-5.5 साल के टाइम के अंदर एक बच्चा एसीसीए कंप्लीट कर लेता है। चार्ट अकाउंटेंसी प्रोफेशन में आपके पास 2 तरह की चार्ट अकाउंटेंसी है जो आप पाकिस्तान में बैठ के कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज द आईकैफ विच इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा एसीसीए है जो कि यूके बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। मैं यहाँ पे आपको एसीसीए की कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो देखें, पहली बात तो ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज अ प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन जो है वो वन ऑफ द सुप्रीम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस क्वालिफिकेशन है। एक बच्चा अगर मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहता है तो सब कुछ मिल मिला के गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स पूरे पाकिस्तान में 15,000 सीट्स हैं, और होता यही है कि मेजॉरिटी बच्चे जो है दे डोंट एंड अप वेयर दे एक्चुअली वांटेड टू, कि उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, या मिलता है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। So, Bismillahirrahmanirrahim, we are back with the second innings. 244 is the target. It's just like a Mount Everest to climb. But we have Bilal Aslam on crease right now who's facing it. He's a great power hitter and a very good player. Halari Hawks has a great name in the community in corporate cricket. Plays it down the ground this time. Although he muscles the ball perfectly, has the potential. Very good hard hitter of the ball. On the other end, Talamakani. He's also the good hard hitter of the ball. So, single there as well. But they have to strike it from the very first delivery. And if they have Bilal Aslam on strike, that means they still have hopes here that they can go achieve that total. This is the power hit. Nicely delivered there. That's a great punch. Bilal Aslam has started striking here. 4 here. First boundary of the innings. Great game. Starting from the very first over. .244, a big target. More or less
the highest total of the tournament as well. Straight to the bowler and in this manner. That's the end of the first over. 6 without any loss. मिलता है जिसकी फीस उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखें, एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन है विच इज़ द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। एज अ पेरेंट बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपके बच्चे ने इंटरमीडिएट या ए लेवल्स कंप्लीट कर लिया, अब व्हाट नेक्स्ट? क्या वो मेडिकल में जाएगा, क्या वो इंजीनियरिंग में जाएगा, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर बैचलर्स करने के लिए जाएगा, वो किस फील्ड में जाएगा? मेरा नाम लुकमान रफीक है एंड आई एम द प्रिंसिपल ऑफ स्क्राइबर एकेडमी। मैं आज आपके Smacks it. That straight away went to Ali Alam, yeah. Smacks it, yeah. That was just the third man. You have to run it very quickly, yeah. Good running between the wickets. Although we can see a little bit of a struggle there, but they are more focused towards the rotation of strike so that they could be comfortable on crease first. Because it isn't an easy game for them. Oh, a very good delivery there. Very good delivery. Dot it is. 1.3 overs already delivered, 7 without any loss. Smacks it down the ground. Very intelligent and very tight fielding being placed there. Because they know they're going to deliver it towards the offside and they'll give the room there. So, very intelligent play, presence of mind. That's magnificent. Slower this time. Went away just for a single. So one more delivery to go, which will end the second over. Although 9 already on the board without any loss. Once again into the gap this time. He found that. That's going to go for a boundary. Ends the over in a style. 2 overs past 13 without any loss. Oh, that's up in the air. And that's going to go all the way. So first maximum of the innings from the bat of Thala. Just look at that. Picked up the length perfectly. 6.
Here we go. Well, he was trying to sweep that. Took out his leg as well, but there's going to be a wide ball signal by the umpire. "21 without any loss." Well, that was a good turn there. They came inside. Bilal Aslam. Well, the struggle continues for Halari Hawks this time. They are not able to just go and bang it over on every single delivery. Although the required run rate is 12.74. Down the ground. Straight to the bowler. Well, where it should have been striked it perfectly, where they are struggling now. Oh, he was trying to sweep that appeal. No response by the umpire there. Here we go, smacks it down the ground. Just a single there. Quite nicely played, end of the third. 22 without any loss.
Down the ground here. It's just a single. Well, Bilal wanted the second one as well. He's not very happy with that single. He wanted the second one too. Nicely played. It's going to be a dot here. Just a single. Now there's going to be a dot once again, I guess. Yes, it is. 55 without any loss. Talamakani now on 21-11. Although 55 is the score. And that once again it's going to be a dot. This overtime line, Imran, he's bowling it nicely. 1 and 3 dots in a row. Once again, down the ground, just slices away. That's going to go for a boundary. 4 more. Talal Makani is also a good striker of the ball. Both the players now, the pair inside the ground for Halari Hawks, they both are a great striker of the ball. 59 without any loss. 1 more delivery to go, which will end the power play now. Oh, that's smacked straight down the ground. 1 bounce and clears defense there. And this man is the end of the power play. 6 overs passed. 63 without any loss. Swelly was trying to loft that once again.
Down the ground once again in this over of Amar. Well, they are not really able to hit that nicely. Although Bilal has a good strike rate and he's on 34 and 25 deliveries. Once again, picked it up nicely, but oh, that's a misfield. That's a misfield. That went for a boundary. That was lucky one there. Bilal Aslam being lucky, putting on a boundary. Although he has picked up very nicely. And that's a no ball as well. It's a free hit. So now an opportunity for Bilal. He can smack it without fear. Yeah, he loves it now. That's going to go down the ground. Well, he was not very happy with that. But taking just a single on the board. One more delivery to go. It will end the 7th one now. 71 without any loss. Still the current run rate 10.39. Out towards the point. Nicely played into the gap. But that's going to go all the way for a boundary. 4 more. That ends the 7th 75 without any loss. Far away from the batter. White ball signaled by the umpire. Here we go. Oh, that's up in the air. Smacked it. Very confident Bilal Aslam. He knew that it's going to go for a maximum. 6. Here we go. Oh, that wasn't easy for Bilal to play it. Very good delivery, Basit Mamdani. 82 without any loss. 7.3 overs delivered. Down the ground. Just a single.
down the ground. Just a single there. No, that's a boundary. That's a boundary. While I was looking away, that went for a boundary there. Just look at that. They were running after it. Or they were going very comfortably and it went for a boundary very slowly. End of the 8th, 87 without any loss. Love the game. Proudly sponsored by Motiwala Mobile Point. चार्ट अकाउंटेंसी प्रोफेशन में अगर एक बच्चा ACCA करना चाहता है
तो वो मैट्रिक के बाद, ओ लेवल्स के बाद, इंटरमीडिएट के बाद, ए लेवल्स के बाद अपना ACCA स्टार्ट कर सकता है। इस ACCA के अंदर जो है इस वक्त इन टोटल 13 पेपर्स होते हैं, जो कि Oh, that's picked up the length perfectly. That's Bilal Aslam with a maximum. They're going to give him the slower deliveries onto the bat. He's going to just bang you up for a maximum. Just look at that. Picking up nicely and delivering some good shots here. Bilal Aslam. He smacks it down the ground. Just a single there. Now it's Talal Makani, who's going to face it 5 away from his half century. 109 without any loss. 9.2 overs delivered. Target of 244. And now they need 135 in 10.4 overs. Oh, that's up in the air and taken. Amar Pasta with a great catch there. So a good innings came to an end. He's been caught on 45 with Talamakani departs. बच्चे को पास करने होते हैं। इस 13 पेपर पास करने के साथ साथ जो है एडिशनली 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। तो इन टोटल 5 साढ़े 5 साल का अरसा लगता है और 5 साढ़े 5 साल के टाइम के अंदर एक बच्चा ACCA कंप्लीट कर लेता है। चार्ट अकाउंटेंसी प्रोफेशन में आपके पास 2 तरह की चार्ट अकाउंटेंसी है जो आप पाकिस्तान में बैठ के कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज़ द ICAF विच इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा ACCA है जो कि UK बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। मैं यहाँ पे आपको ACCA की कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो देखें, पहली बात तो ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज अ प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन जो है वो वन ऑफ द सुप्रीम Oh, that's bad. That's bad. Really bad. Gone. Second one down. In a row. Great delivery there. Put off the out stamp. Moving on a golden duck. अकाउंटिंग एंड फाइनेंस क्वालिफिकेशन है। एक बच्चा अगर मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहता है तो सब कुछ मिल मिला के गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स पूरे पाकिस्तान में 15,000 सीट्स हैं, और होता यही है कि मेजॉरिटी बच्चे जो है दे डोंट एंड अप वेयर दे एक्चुअली वांटेड टू, कि उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, या मिलता है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है जिसकी फीस उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखें, एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन है विच इज़ द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी।
एज अ पेरेंट बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपके बच्चे ने इंटरमीडिएट या ए लेवल्स कंप्लीट कर लिया, अब व्हाट नेक्स्ट? क्या वो मेडिकल में जाएगा, क्या वो इंजीनियरिंग में जाएगा, क्या वो फाइनेंस की फील्ड में जाएगा, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर बैचलर्स करने के लिए जाएगा, वो किस फील्ड में जाएगा? मेरा नाम लुकमान रफ़ीक है एंड आई एम द प्रिंसिपल ऑफ स्क्राइबर एकेडमी। मैं आज आपके Straight to the fielder. Although he was on a hat trick, Basit. But Abdullah played it nicely there. Well, when you're on a hat trick, you have to deliver it a little difficult delivery. But he did 2 dots in a row. End of the 10th over, 109 for the loss of 2 wickets. So that's a wide delivery. Subhan Faisal, the new bowler in, and delivers it a wide. Starts off 110 for the loss of 2 wickets. Bilal Aslam standing on 61 and 37 deliveries. Oh, once again, quicker ones and doing it wide will be costly. Goes for a boundary. He's got 5 runs on this delivery. Although he has to re-bowl it. Wasn't easy for the keeper to grab it. There's some gifting some runs away here. Score is now 115 for the loss of 2 wickets. Oh, a little swing in the ball. Swing and a miss.
Oh, that's a little inside there. Oh, that's just simply giving the runs away, doing some overthrows. Got some runs on the board there. And Bilal is very quick. He's eagle-eyed because he knows every single run is important. He needs to run at any cost. Score is now 118 for the loss of 2 wickets. 10.2 overs delivered. Nick of the bat towards the fine leg. That's gonna be a lucky one. Boundary there. 4. Here we go. Just a single. Smacks it down the ground. Very great grab in the end. That's magnificent there. Just a single on the board. The score now races up to 124 for the loss of 2 wickets. Bilal Aslam once again on strike. Well, he has played 41 deliveries with 65 in the end. Smacks it once again. But didn't went too far there. Ending of the over in a single. So end of the 11th, 125 for 2.
Proudly sponsored by Motiwala Mobile Point. That's down the ground. Just a single. That's delivered the punch towards the covers. The covers was taken outside the circle. Intelligent field. Oh my. That's the lucky one, yeah. Although he was trying to strike it, but that's the bottom edge, which gave some runs. It was between the legs of the keeper, and he was puzzled up. 145 for 2. And gone. Pull them. That's the another loss for Halari Hawks here. Here we go. Rafi, the new man in. Although starts off his account with a single. It's a couple of runs, in fact. It's 12.5 overs delivered, 147 for 3. Plays it nicely down the ground. Single on the board. That's the end of the 13th, 148 for 3.
That's a Weyer. Disappeared. Big hit. 6. That's Bilal Aslam all the way. It's an amazing striker of the ball. He's very keen to hit. Given him again. And drops it. This can be the blunder, the biggest blunder. That was the wicket of Bilal Aslam. That was the biggest wicket. Oh, now he's not going to leave you. That's going to shatter it all. A big drop it can be. Little away from the batter. It's just a dot there. 13.4 overs. Oh, that's straight down the ground. Although it wasn't very easy because, well, it bumped and bounced a little. That was the little save for the fielder because it would have hit his face. Well, he was trying to lob that once again. Wasn't able to. So that's the end of the 14th. 157. चार्ट अकाउंटेंसी प्रोफेशन में अगर एक बच्चा एसीसीए करना चाहता है तो वो मैट्रिक के बाद, ओ लेवल्स के बाद, इंटरमीडिएट के बाद, ए लेवल्स के बाद अपना एसीसीए स्टार्ट कर सकता है। इस एसीसीए के अंदर जो है इस वक्त इन टोटल 13 पेपर्स होते हैं जो कि एक बच्चे को पास करने होते हैं। इस 13 पेपर पास करने के साथ साथ जो है एडिशनली 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। तो इन टोटल 5 साढ़े 5 साल का अरसा लगता है और 5 साढ़े 5 साल के टाइम के अंदर एक बच्चा एसीसीए कंप्लीट कर लेता है। चार्ट अकाउंटेंसी प्रोफेशन में आपके पास 2 तरह की चार्ट अकाउंटेंसी है जो आप पाकिस्तान में बैठ के कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज द आईकैफ व्हिच इज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान और दूसरा एसीसीए है जो कि यूके बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। मैं यहाँ पे आपको एसीसीए की कुछ चीज़ें Amar Pasta once again brought back to bowl here. He's bowling the last over of his spell, although he has conceded 37, taken a wicket in his 3.1. Well, Bilal is going for a lofted one on every single delivery, but struggle in pass too. Just a single there. 159 for 3. Oh, slower away. Little bit of a turn. Wasn't able for the batter to play. $85 more required from 33 deliveries now. Well, he's turning very nicely. Amar Pasta becoming a nightmare here. Great delivery. Although Raf is struggling a little. Played 8, scored just 6 in it. Well, just smacks it. Didn't use his feet a lot. He's taken a single there. Score now races up to 660. One more to go. That's down the ground. We'll get one more. So in this manner, it's the end of the over.
15 overs gone, 161 for the loss of 3 wickets. डिस्कस करूंगा। तो देखें, पहली बात तो ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज अ प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन जो है वो वन ऑफ द सुप्रीम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस क्वालिफिकेशन है। एक बच्चा अगर मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहता है तो सब कुछ मिल मिला के गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स पूरे पाकिस्तान में 15,000 सीट्स हैं, और होता यही है कि मेजॉरिटी बच्चे जो है दे डोंट एंड अप वेयर दे एक्चुअली वांटेड टू, कि उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, या मिलता है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है जिसकी फीस उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखें, एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन है विच इज़ द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। एज अ पेरेंट बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपके बच्चे ने इंटरमीडिएट या ए लेवल्स कंप्लीट कर लिया, अब व्हाट नेक्स्ट। Oh, that's up in the air and gone all the way. Bilal Aslam is not stopping. Just look at that. He's picking up the length so perfectly. You can see in the replay as well. That's out of the park. Very nicely hit there by Bilal Aslam. He's on 95 now. He hits it once again. And that clears the fence as well. Magnificent striking by Bilal. 4 more. Oh, that's down the ground and taking a single, and in this manner, it's the century for Bilal. Century by Bilal Aslam. That was much awaited, and it's really celebrated in the big match. He has hit 8 sixes and 8 fours, a 55 delivery century. Magnificent. Backbone for his team. Always been an entertainment. Down the ground. Single once again. Oh, smacks it once again. Finds the gap once again. 4 more. One more delivery to go, which will end the 16th now. He hit that this time to a long off. Just a single. So now it's the end of the 1678 for 3. क्या वो मेडिकल में जाएगा, क्या वो इंजीनियरिंग में जाएगा, क्या वो फाइनेंस की फील्ड में जाएगा, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर बैचलर्स करने के लिए जाएगा, वो किस फील्ड में जाएगा। मेरा नाम लुकमान रफ़ीक है एंड आई एम द प्रिंसिपल ऑफ स्क्राइबर एकेडमी। मैं आज आपके
Well, that's a wide delivery signal by the umpire. Basit bowling it once again. Bowling the last over of his spell. He's conceded 34 and taken 2 wickets. He hits that up in the air. Bilal Aslam with a biggie. Dropping Bilal's catch was a big mistake for Okhai strikers here. That will be a nightmare for them, surely. Because now he's striking it and he's cleaning it up. 59 more required from 23 deliveries. 185 for 3. Oh, that's put away towards the extra covers. Just a single. $186 for 3. Now Rafe, he's gonna face it. Some words here between both the batters. Oh, gone! Bowled him. That's the 4th one down for Halari Hawks. Basit took his 3rd. Once again into the gap this time. Well, that's up in the air. Smacked it there. Smacked this time. Here we go. Oh, that's up in the air. Smacked it. So, oh, connected well. That was the crunchy sound. Oh, that's picked up the length perfectly. That. Oh, once again. Nick of the bat. Now gonna strike it. Mohammad Bilal, the new man in. He just took a single and gave the strike to Bilal Aslam here. Well, when you'll deliver it to Bilal, he's gonna smack you there. Maximum once again. He's still not stopping. He's not tired at all. He's very fit. Bilal Aslam. That's down the ground with single there. This ends the over as well. 17 overs passed. 194 for the loss of 4 wickets. 18 deliveries more left. 50 more required.
Here we go. Well, he's delivering the punches. He's welcoming you with a six. Every single bowler. He delivers the first over. He delivered the first delivery of the over, and it's departed for a maximum by Bilal. He's in great form today. Oh, well, he was trying to love that. Didn't connect it well. Imran Mohammadi being lucky there. Although Bilal is not stopping at any cost. Well, he's a great striker of the ball, Bilal. 200 up for Halari Hawks. 200 for 4. Nicely played it down the ground. Two fielders there. They've taken a couple of runs. Still too fit. Showing the fitness as well. Very potential player. A backbone for his team, Bilal Aslam, on 127. Last 30 deliveries, 14 sixes. Oh my. Here we go, he picks it. He picks it perfectly. That's out of the park. 6. Bilal Aslam is on fire. The master blaster. $208 for 4. 17.4 delivered. 36 more required from 14 now. Hits it towards the point this time. Finds the gap. He's not stopping, only dealing in boundaries. 4 more. He's much set on the crease. He's playing the game as it should be. It's a big game, big target, and he's achieving it like it's nothing to play. 32 more required in 13. Yeah, he picks it once again. Similar area. That's going to go for a boundary. Bilal Aslam, you beauty. 4 more. It's the expensive over of 22 runs. 18 overs passed. 216 for 4. Now 28 more required in 2 overs. Uses his feet and given the strike to the hitman. 27 more required, 11 deliveries more to go. 217 for the loss of 4 wickets. And that's gonna be in the favor for Halari Hawks. That's a wide. And once again a wide. That's the pressure. That's the pressure. And Bilal is giving a very good check.
There's an announcement as well for Bilal Aslam. I'll announce it after this delivery. Oh, that's up in the air. And oh, that's dropped, although it wasn't easy for the fielder to grab it, although he was running from very far. It wasn't very easy. But Bilal Aslam is playing a magnificent inning today, and there's an announcement for him as well. 10,000 rupees by Haris Altaf for Bilal Aslam for today's innings. He's amazing. Oh, he plays it down the ground once again. He wants to run for the second one as well. No! Oh, that's very risky. The finger is raised, gone. Why did he stop there? Although Bilal wanted a run, he was already half of the crease down. He was screaming, but no. That was a blunder, but still, Bilal Aslam is safe. That's a good news for them. Wicket plus a single. Bilal still got 10,000 from Haris Altaf. You don't need to worry. But you have to play it nicely. You have to win it for your team. $22 more required from 8 deliveries. 222 already on the board. 5 wickets down. Saqib Razak, the new man in, although he will go on the non-striker. Bilal will take the strike. He's in much great form today. Oh, that's the neck there. But he's not going to run. He wasn't happy with that. That's a dot here. 22 more to win from 7 deliveries. There he plays it down the ground. Will take a single there, and in this manner it's the end of the 19th as well. 21 more required from the last over. 223 for 5. Subhan Faisal for the last over. The all-important, crucial one. 21 more required in the last.
And that's Bilal Aslam who's gonna face it. Already played 72 deliveries. He's a little tired as well. And that's... oh! Misfield at this point. Now that's no excuse for that misfield. There shouldn't be any excuse for that misfield. At this crucial moment, this misfield will be very costly. 17 more required from 5 now. 227 for 5. Whoa, that's the turning point of the game. Oh, bowled him! Big wicket down. Bilal Aslam being little unlucky. He departed on 149, just one step away from his 150. Oh, such a great game by him today. He built up his inning today. He did it for his team. He made 2 close. 12 sixes and 12 boundaries. Strike rate of 201.35. Excellent play by this player today. Bilal Aslam was amazing. That was a magnificent innings here. And there should be applause for this man. Much appreciations. Big wicket down. Bilal departs. Although Subhan took a big wicket here, it can be the breakthrough. Just look at the replay. That's the big wicket. He was trying to loft. Little miss. Onto the middle stump. Both the stumps shared out of the pitch there. Magnificent bowling here by Subhan. Mohsin, the new man in. 17 more required of 4. Oh, gone! Second one in a row. Pulled him. Another one down here. Mohsin Hanif departs on a golden duck. Now it's a difficulty. 3 deliveries more to go. 3 maximums required. Anyhow, 227 for 7. So here we go. Usman Ghani, the new man. And he played it for a single there, although it was on a hat-trick ball for Subhan. But now 16 more required in 2. They were just round the corner. Halari Hawks. Bilal played like a one-man army. It's down the ground. Just a single. That's a little upset here. Although they tried very hard. They played it really nicely, but now 15 more required in the last delivery. Delivered the last.
And that went outside the boundary, but still it's all about a great game which was played between Halari Hawks and Okhai Strikers, and the Okhai Strikers won the game by 10 runs, although they took till end. But it was a great game. We'll be back with the presentations in a bit.
Proudly sponsored by Motiwala Mobile Point. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim, we are here with the presentation. आज का मैच बड़ा जबरदस्त खेला गया. It was the high scoring match. 244 was the target. बिल्कुल आखिर तक लेके गए, and that was amazing by Halari Hawks, but that was a little bad luck here. That was a little unfortunate, and Okhai Strikers fortunately won this game by 10 runs. So now we are here to give the awards. First of all, I'd like to call the captain of Halari Hawks, Bilal Aslam, to please come near. Bilal, first of all, that was a tremendous play. इतना आसान नहीं था. Although मोराल थोड़ा सा डाउन हो जाता है कितने बड़े स्कोर को देखने के बाद, लेकिन आखिर तक लेके गए, लास्ट ओवर तक, और बिल्कुल निक से प्रॉब्लम हो गई. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो ओखाई को मुबारकबाद दूंगा, वो क्वालिफाई कर गए. बाकी दूसरा ये कि स्टार्टिंग में मोराल तो डाउन था, पर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी थी वो दी थी. एंड तक गए, फिनिश नहीं कर सके, इस चीज़ का अफसोस है. पर अल्लाह का शुक्र है कि इधर तक मैच को लेके आए और वन साइड मैच नहीं हारे. ऑब्वियसली इसके अंदर आपकी इनिंग्स का बहुत बड़ा इनपुट है. 149 रन्स, ऑब्वियसली वो भी थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो गया दैट 150 से पहले जस्ट वन स्टेप, एक स्टेप पहले आप आउट हो गए, और ऑब्वियसली सब के सब उस पर थोड़ा सा अपसेट भी थे. लेकिन इतनी अच्छी इनिंग्स को बिल्टअप करने के बाद बिल्कुल आखिर में जाके ये प्रॉब्लम हुआ. सो उस वक्त आप क्या फील कर रहे थे? बड़ा अफसोस हो रहा था, पर एक हैंड से मारना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि रन भी भाग रहे थे और मार भी रहे थे, तो एंड में सारा स्टेमिना ख़त्म हो गया था. अगर जिस तरह उनके हमारे पास था और सुभान ने पार्टनरशिप लगाई थी, अगर हमारी तरफ से ऐसी लगती तला के बाद, तो इंशाल्लाह हम ये रन उतार देते. ऑब्वियसली पार्टनरशिप तो नहीं लग पा रही थी, तो उसका कोई इशू थ्रू द ग्राउंड था या कुछ थोड़ी सी टीम कॉम्बिनेशन में इशू हो रहा था? ग्राउंड का तो नहीं था, जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे ये, अगर एक तरह से बोले तो. ग्राउंड का तो नहीं था, जब उसी विकेट पे हम भी खेले, अमार भी खेला, सुभान भी खेला, शाकिर भाई भी खेले, पर जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं लिया आगे. Here, this happens. This was a little unfortunate, but that was a tremendous play by your team. Thank you. So now, the captain, the winning captain, Amar Pasta, to please come near. Amar, first of all, congratulations. क्या ही उम्दा गेम. 243 का इतना बड़ा टोटल, और फिर इसके बाद although it was like a bone in the epiglottis at points, but बड़े ज़बरदस्त तरीके से निकाला. बिल्कुल, जैसे कि देखा जाए, मैंने पहले ही बोला था ये बैटिंग विकेट है, इस पे रन तो होंगे, और बिलाल से उम्मीद थी, पहले ही 200 मार चुका है माशाल्लाह इस टूर्नामेंट में, तो उम्मीद थी कि वही करेगा. फिर हमारे फील्डर्स ने साथ नहीं दिया, कैचेस छोड़े, और फिर बिलाल तो आउटस्टैंडिंग आज माशाल्लाह. लास्ट ओवर की मैं बात करूंगा, बिकॉज एट दैट पॉइंट एवरीबडी न्यू दैट बिलाल वाज इन अ ग्रेट पेस. मतलब वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज से खेल रहा था, और आखिरी पॉइंट पे जब विकेट हासिल हुई और फिर कंटिन्यूस 2 विकेट्स, दैट वाज द टर्निंग. सो कोई टिप्स वगैरह या कोई इस तरीके की जेलन परफॉर्मेंस के वहाँ पर टीम का कॉम्बिनेशन बना? बिल्कुल, हम लास्ट ओवर का सोच के बैठे थे कि फास्ट बॉलर से ही करवाना है, और सुभान पे कॉन्फिडेंस था. आज उसने माशाल्लाह रन भी किए हैं, तो उसने आज डिज़र्व करता है, वो उसने आज बहुत अच्छा ओवर किया. जी हाँ, बिल्कुल डिजर्व भी करते हैं, और इन्हें ज़रूर रिवॉर्ड भी दिया जाएगा. सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, एंड यू हैव क्वालिफाइड एज वेल. So now the time for awards. The first award is the cool player of the match, a cash prize of rupees 1500 by Qualify, and best Thai, a gift hamper from Tex World, and a 5000 rupees cash by their owner as well, Subhan Faisal. It's lots of awards for him as well. Okay, so now the next is another cool player of the match, a cash prize of rupees 1500 by Dominion Real Estate and Scribers Academy, a discount voucher from OD Sindhi Muslim branch, and a 5000 cash prize by their owner as well. It goes to Amar Pasta, the captain. He was also tremendous with the bat and the ball.
And now the man of the match, a cash prize of rupees 3,000 from Motiwala Mobile Point, a cash prize of rupees 3,000 from Asif and Company and Blue Sky Farmhouse, and a suit from Al Zuhaib. And it goes to none other than Bilal Aslam. Okay, thank you so much. That was it from the presentation. Now we'll be meeting you tomorrow at the TMC Cricket Ground. Tomorrow the match will be played between Duraji and Kutiana. Duraji versus Kutiana. Stay tuned with us. That was it from the presentation.